some of our friends say that the challenge is also on account of a few individuals who are or who could be supporting them. That also is admittedly a challenge, like in any society where some persons, some elements would always, because of money or because of other reasons or a combination of reasons, would like to be a part of this syndicate, crime syndicate called terrorism and secessionism, supported by hostile and powers across. ये रहेगा और ये एक चैलेंज को भी हम मानते हैं। और वो दोनों चैलेंज, द चैलेंज ऑफ द गन एंड द बम बाय द फॉरेन टेररिस्ट्स एंड द चैलेंज ऑफ a few who are supporting or maybe extending facilitation, these two challenges are being dealt and being dealt firmly in a planned manner. The challenge of the bomb and the gun is being responded by way of a coordinated plan of the security architecture, which includes the police, the central paramilitary forces and the Indian Army, and of course our able agencies. As far as the treacherous or treasonous supporter within, he too is being dealt with under the law. We have very able and professionally very competent investigating agencies like NIA, SIA and also police teams within the J&K police who would investigate into the crimes of these supporters, aiders, abettors, facilitators and enemy agents. अब अगर ये कोई पूछता है कि साहब ये सच नहीं है, तो उस आंकड़े के एंगल से देखें या आप एक खौफ की मात्रा के एंगल से देखें, आपको पूरा मिलेगा, खासकर वादी में आपको मिलेगा। देयर इज़ ऑर्डर एंड देयर इज़ ए विजिबल चेंज इन दिस सिचुएशन। द इलेक्शन इटसेल्फ इज़ एविडेंस ऑफ इट। जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती थी, क्यों नहीं हो पाती थी? इन्हीं टेररिस्ट्स और सेपरेटिस्ट्स की भय से नहीं हो पाती थी। तो टेररिस्ट की, सेपरेटिस्ट की भय जब कम हो गया, तभी जाकर वोटिंग पार्टिसिपेशन बढ़ गया। अब इसको कोई अगर इंटरप्रेट करता है कि किसी एंगल से पॉलिटिकली इंटरप्रेट करता है कि नैरेटिव के एंगल से वो सपोर्ट एक्स को या वाई को या जेड को गया, हम उसको उस नज़रिया से नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं जो एनिमी की भी बात करता है उसको भी कहने की आज़ादी जो है वो इंडियन स्टेट ही देता है। ये इंडियन स्टेट का बड़पन है, ये इंडियन स्टेट की लिबरल डेमोक्रेसी की लार्ज हार्टेडनेस है कि आपको एक कॉन्ट्रारियन व्यू रखने देता है टू द एक्सटेंट ऑफ इवन बीइंग against the very system or the boat in which you are sitting. But some questions many of my friends in the media and other circles often raise as to how it will impact the security situation without getting into the terrain of politics, especially electoral. From the strict law enforcement view, our position is that as long as the same law-making bodies of which people are a part professing even separatism, as long as the law they have passed says that murder is a crime, police and law enforcement agency will go ahead in proving that a murder is a murder.
So, to that extent, I think the responsibility of the police, it will discharge it firmly and fearlessly.